Hi guys, so we'll be starting with FEMA Act 1999. Now this covers your chapter 2 and chapter 3 from the SBEC module. Now let's understand what is FEMA Act, Foreign Exchange Management Act. Foreign exchange simply means foreign currency. Now when is foreign currency dealt with? Whenever there is an import or an export of goods, foreign exchange is dealt with. Forex. The regulator of foreign exchange is your Reserve Bank of India. Now let's see. Before the FEMA Act, there was the FERA Act. FERA Act was very stringent and was little restrictive in doing business itself. So the FEMA Act was an advancement to the FERA, Foreign Exchange Management Act 1999. The objectives of FEMA Act was to simplify the external trade and payments and to develop and promote the foreign exchange market. Now, this is a small objectives of FEMA Act has been given in the form of a question and answer. You can read this. It's a past exam question. And what is the objectives of FEMA? We just saw. Now, the regulator is RBI for foreign exchange. But if a person wants to buy foreign exchange, does he go to RBI? Answer is no. There is an intermediary in between. That intermediary is called as authorized dealers or authorized persons. They are generally banks or money exchangers, money converters, whatever you call them. Okay, so you go to them and they have arrangements with RBI, and accordingly the foreign currency is availed by any person who wants foreign currency. So for example, if I am here, I want to buy dollars. So I go to a bank like HDFC Bank. They are authorized by RBI. That's why they're called as authorized persons, because they are authorized by RBI to deal in foreign exchange. So they are authorized to deal in foreign exchange. They include authorized dealers, money exchangers, offshore banking units, or any other name. Foreign exchange simply means foreign currency. When I say foreign security, means foreign shares like shares of Apple, Google, etc. It could include shares, bonds, stocks, debentures, anything expressed in foreign currency. Now, currency notes again includes banks, coins, and banknotes. Person, when I say, in the word person normally includes a natural person, that is an individual, and it also includes artificial persons. So whenever in the act you will see the word person, it includes individuals, HUF, firms, company, associations of persons, etc. So even artificial juridical persons can be treated as persons. Now when they say person resident in India, so we had seen that any person who in the previous year has stayed for more than 182 days in India can be called as a person resident of India for the purpose of FEMA Act. Now when I say person of Indian origin और NRI में डिफरेंस है. अगर मैं बोलूँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और पर्सन ऑफ NRI, क्या डिफरेंस है मुझे बताओ. लक्ष्मी मित्तल. Now Lakshmi Mittal is there, or I can say Sundar Pichai. Are they persons of Indian origin or they are NRIs? How do you determine that? So basically, non-resident Indian, मतलब उसके पास में passport किसका होगा? He will have an Indian passport who must have gone abroad to work. Okay, so means an individual is resident outside India, but who is a citizen of India or has a individual of Indian origin. They're called as NRI. So कितने हम लोग के फैमिली मेंबर्स में कितने ब्रदर्स सिस्टर्स अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो व्हाट विल दे बी कॉल्ड? दे विल बी कॉल्ड एज NRIs. फिर कितनी बार वो लोग कनाडा में जाते हैं, वो लोग तो NRI काउंट होंगे. फिर बाद में अपनी सिटीजनशिप बदल देते हैं. They are not Indian citizenship. They give up the Indian passport
then what will they be called? They will be called as persons of Indian origin. So they will be called as persons of Indian origin because now they don't hold Indian citizenship. So Indian origin क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि they at once upon a time they had held an Indian passport, या फिर उनके parents या grandparents were citizens of India, or whose spouse is of Indian origin. Okay, they all can be called as persons of Indian origin. Then coming to most important and most repeatedly asked question in the exam, what are transactions in FEMA? Are divided in two parts. One is your current account transactions and second is your capital account transactions. Okay, from exam point of view, this is the most important and asked question. So let's understand what is meaning of current account and capital account transactions. Capital account transactions are all those which affect assets and liabilities. Okay, now let's say if I buy immovable property, तो वो कौन सा होगा? It will affect my assets, or if I take a loan, it will affect my liability. So जो भी चीज asset और liability को hit होती है, long term in nature होता है, non repetitive होता है, वो क्या होगा? Capital nature. But जो other than capital account transactions, so other than capital account transaction जो भी होते हैं वो सब current में आएंगे. So let's say day to day transaction. So one is the meaning. All those transactions other than capital account are called as current account. Examples of these. तो पहले meaning दे दिया. Second में examples. Examples में कौन से? Payments in connection with foreign trade. तो सोचो कोई day to day payments कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट मिल रहा है लोन पे, रेमिटेंस कर रहा हूँ पेरेंट्स के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, या एजुकेशन मेडिकल केयर फॉर पेरेंट्स, ये सब तुम्हारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है बिकॉज ये सब एसेट्स लायबिलिटीज को हिट नहीं करते. ओके, देन comes your dealing in current account transaction, section 5. Now any person who sells or draws foreign exchange from an authorized person, if such a sale is a current account transaction. So it allows any person to sell or draw, that is buy anything for doing a current account transaction. So let's say if someone wants to give or withdraw money, they want to withdraw money for a foreign travel, तो ये current account transaction है या capital account? To withdraw money for foreign travel, does it hit your assets or liabilities? Answer is no. So it's a current account transaction. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं. दे हैव फ्रेम्ड द फॉरेन एक्सचेंज. तो फेम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000 फॉर्मुलेट किए हैं. ओके, लेट्स सी. नेक्स्ट, योर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, दैट इज योर फेम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000. इसके अंदर यू कैन हैव प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस जो तुम कर ही नहीं सकते हो. ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्टेन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कुछ कर ही नहीं सकते. अब कौन से ये देखते हैं. इफ इमेजिन मुझे यहाँ से दूसरी कंट्री में लॉटरी की खरीदनी है, लॉस वेगस में यहाँ से मेरे को लॉटरी खरीदनी है. यू थिंक इसके लिए मैं विड्रॉ कर सकता हूँ पैसा टू बाय लॉटरीज अब्रॉड? आंसर इज नो. सेकंड, मेरे को बेटिंग करना है, रेसिंग राइडिंग ये सब पे बेटिंग करना है, तो कैन आई डू? नो. If I want to buy any band magazines, I want to invest in buying lottery tickets or anything for football betting, तो ये सब नहीं अलाउड है. ओके, यहाँ तक तो सिंपल था. फिर अभी आगे देखते हैं. पेमेंट्स फॉर कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. नाउ नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ से एक एक करके देखते हैं. फोर्थ वाला, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट
made towards equity investment in joint venture wholly owned subsidiaries abroad. अब समझते क्या सिचुएशन है. सोचो मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ और मैं यहाँ पे अब्रॉड के कोई जेवी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, जॉइंट वेंचर. तो मुझे कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यस और नो. कैपिटल कंट्रीब्यूशन, या मेरे को इक्वल स्टेक चाहिए कंपनी में, तो इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा मेरा. सो मेरे को एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है. आई वांट टू बाय 50% स्टेक इन दिस जेवी. अब इसके लिए मैं पैसे दूं, बट यहाँ पे पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. तो आई एम टेलिंग देम कि अगेंस्ट दिस सोचो, मैं बोल सकता हूँ मेरा यहाँ पे कैपिटल एसेट कंट्रीब्यूशन रहेगा. सो मैं कोई मशीनरी दे दूंगा, उसके बदले में आप मेरे को 50% स्टेक दे दो. ठीक है. अब यहाँ से जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि कोई भी पैसा रेमिटेंस इंडिया में आ रहा है, डॉलर, पाउंड, ये मशीन एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, बट कोई सामने पैसा ही नहीं आ रहा है. तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि जब पैसा ही नहीं आ रहा है तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स दिस इज प्रोहिबिटेड. तो सोचो एक्सपोर्ट किया मैंने, बट कुछ भी पैसा आने ही नहीं वाला है, तो ये एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी कमीशन है, यू थिंक वी शुड अलाउ इट? बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग विड्रॉ करके बाहर देंगे कि भाई इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मैं कमीशन दे रहा हूँ, तो डॉलर्स, पाउंड जो भी है अब्रॉड चले जाएगा, और एंट्री में तो इंडिया में कुछ आ रहा ही नहीं है, तो वो इसके लिए उसको बैन किया हुआ है. नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड. तो ये सारे प्रोहिबिटेड है. रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल. अब डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है? सोचो कि एक इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, अब ये कंपनी बाहर डिविडेंड देना चाहती है. ठीक है, तो डिविडेंड में एक पैसा अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? द कंपनी वांट्स टू गिव डिविडेंड टू इट्स फॉरेन शेयर होल्डर्स. तो यहाँ पे सोचो पाउंड, डॉलर्स, ये सब है, तो वो बोल रहे हैं आप डिविडेंड नहीं दे सकते इफ यू नॉट अर्न दैट मच इनकम. सोचो इंडिया के अंदर इतनी इनकम हुई नहीं है, प्रॉफिट्स हुए ही नहीं है, और तुम पैसा बाहर डिविडेंड बांटना चाहते हो, तो बोल रहे नहीं, आपके ऊपर पैसा अंदर आया, आपने अर्न किया, तो आप वहां पे दे सकते हो, बट अर्निंग ही नहीं हो रही है यहाँ पे, तो तुम अलाउ भी नहीं करेंगे डिविडेंड बाहर भेजने को इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी. सो रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड इन फॉरेन करेंसी इज प्रोहिबिटेड, बिकॉज डिविडेंड बैलेंसिंग देखेंगे हम लोग के, बैलेंस होना चाहिए, आप दे रहे हो तो लाभ भी, बेनिफिट आना भी चाहिए. सेकेंड, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन रूपी ऑन एक्सपोर्ट्स under the rupee state credits route except commission up to 10% of the invoice value of tea and tobacco. अब ये क्या था, सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया था. ओके, बट इंडियन गवर्नमेंट कुड नॉट रीपे. तो सोचो यहाँ पे रशिया है, रशिया को हम लोग उन लोग ने कुछ दिया था हमें पैसे, but we could not repay. So what we told them, the Indian government could not repay. तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि बॉस हम आपको पैसे रीपे कर पाएंगे, हम डायरेक्ट नहीं देंगे आपको, हम लोग क्या देंगे, टी एंड टबैको, ये सब दे दे के, मनी इज वर्थ आपको दे के हम लोग रीपे कर देंगे. नाउ टेल मी, जब यहाँ पे हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स होंगे, इंडियन एक्सपोर्टर्स ये एक्सपोर्ट कर रहे टी एंड टबैको, रशिया ने तो पेमेंट कर दिया है पहले ही गवर्नमेंट को, तो वो तो पेमेंट नहीं करेगी, तो कौन पेमेंट करेगा इसका? इंडियन गवर्नमेंट विल पे टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ रशिया. तो ऑब्वियसली इंडिया की लायबिलिटी है, तो ये इस पे लिमिट लगा रहे हैं कि अगर आप बेचे उतना तो मिल ही जाएगा, बट कमीशन कितना लगा दिया वो लोग ने, अप टू मैक्स 10%, उसके बियॉन्ड प्रोहिबिटेड है टू गिव, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिविंग कमीशन अब्रॉड, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा. नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी अकाउंट स्कीम. अब नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी अकाउंट स्कीम में जो पैसा है
नॉन रेसिडेंट्स को इंडिया में ही रखना पड़ेगा. ओके, दिस इट इज नॉन रिपैट्रिएबल. तो एक नॉन रेसिडेंट है, उसने इंडिया में ही अकाउंट बनाएगा, सोचो इंडिया में उसकी इनकम है, तो वो नॉन रेसिडेंट रूपी इसमें होगा. अब ये रुपीस है, इसको रिपैट्रिएट हम लोग नहीं अलाउ कर रहे. तो जो इसके ऊपर का आपने सेविंग अकाउंट में डाला होगा, इंटरेस्ट आया होगा, तो इसको भी रिपैट्रिएट नहीं कर सकते हो. ओके, सो ये स्पेशल स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट बोल रहे नॉन रेसिडेंट्स यहाँ पे रख सकते हैं, उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट देगा, बट एक कंडीशन पे कि इसको आप वापस बाहर नहीं बेच सकते, आप चाहिए इंडिया में खर्चा कर दो. ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय एनी पर्सन फॉर ट्रैवल टू नेपाल एंड भूटान. अब नेपाल एंड भूटान में तुम रुपीज लेके जा सकते हो, तो फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करना अलाउड नहीं है. तो ये यू कैन रिमेंबर, दे कैन आस्क यू नेम ऑफ फ्यू ट्रांजैक्शंस which are prohibited in current account transactions. So lottery, gambling, horse racing, then you have your dividend balancing, then you have interest on loan, interest फिर एक है कॉल बैक सर्विसेज. कॉल बैक सर्विसेज भी अलाउड नहीं है. कॉल बैक सर्विसेज में क्या होता है कि यहाँ पे इंडियन कंपनी है या इंडियन पार्टी है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से वन कंज्यूमर इज देयर, वो लोग ने लैक में इंटरनेशनल से गुड्स खरीदे. ओके, यूएस की कंपनी है, तो यूएस की कंपनी क्या बोल रही है कि आप है ना कॉल करेंगे, सोचो कंज्यूमर कंप्लेन है कुछ, तो ये कॉल करेंगे तो बहुत हाई कॉस्ट लगेगा. बट हाई कॉस्ट लगता है तो अपनी इंडियन टेलीकॉम कंपनीज कमाती है, तो वो क्या बोल रहे हैं, आप एक काम करो, खाली मिस कॉल करना, कॉल बैक हम करेंगे. तो इसमें क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, तो दे आर सेइंग यू आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ मनी फॉर दिस कॉल बैक सर्विसेज आल्सो. Next, we'll be seeing certain cases in which you require approval of the government. So first we saw the prohibited transactions. Now we are seeing the transaction which require approval. So in Rule 5, they have given you which all transactions require approval. They are all given in the Schedule 3. So these transactions, if given, if done, these current account transactions, if gone beyond the limit, then they require approval of RBI to do it. Approval of RBI. Let's see. This we've also seen in other chapter. In the liberalized remittance scheme, if you remember, liberalized remittance scheme, कितना लिमिट था कि तुम फ्रीली ट्रांजैक्शंस कर सकते थे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. द अमाउंट वाज $250,000 जितना तुम फ्रीली ट्रांजैक्शन कर सकते थे. अगर तुमको उससे ज्यादा रेमिटेंस करना है अब्रॉड, तो तुमको फिर आरबीआई का अप्रूवल चाहिए फॉर ऑल दीज थिंग्स. whether you want to go beyond this limit, for any of these transactions you require approval. Then comes for facilities for persons other than individuals. ऊपर 2 लाख liberalized remittance scheme is for individuals. अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए 2,50,000 नहीं है, अलग अलग लिमिट्स दिए हुए हैं. तो ये भी हम लोग ने देखा था इन योर चैप्टर. Now the following remittance other than individuals require prior approval. So let's say एक donation देना है abroad exceeding 1% of the foreign exchange earnings during the previous 3 financial years, or 5 lakh, 50 lakhs US dollars, whichever is less, for any creation of any chairs in a educational institute. Now when I say creation of a chair means what, कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, तुम्हें अपना एक प्लेस बनाना है कि ये हमारे रेगुलर डोनर्स है, कितनी बार एक्स एल्यूमिनाइज होते हैं. जनरली वो सेमी फील्ड के करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्ला will want to donate money, but they will donate in a automobile engineering college. तो वो सेम होना चाहिए. contribution of funds should be promoted by the educational institutions and the contribution to technical institutions in the field of the company. तो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में जाएगा. Next, then they've given commission to commissions
per transactions to agents abroad for sale of flats or commercial plots exceeding 25,000 or 5% of the inward remittance, whichever is more. So let's say if Shah Rukh Khan has houses in Dubai, he wants to sell the flat, ठीक है, in excess, and he wants to give commission to the agent in excess of these limits, then again he'll require approval. So ये सारे approval routes में आते हैं. Then we finished our current account transaction. So current account transaction में we've seen what are the prohibited, what come under the approval. Okay, approval मैंने वो लोग ने individuals के लिए भी दिया है, और your next they have also given for your other than individuals. Then they have given you what is your current account transactions. They have given the meaning, and they have given you the examples of current account transactions. Okay, moving forward, what is your capital account transactions? Now capital account transactions are those which alter your assets and liabilities. Now assets and liabilities में कौन से होते हैं? तो लोग दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. शेड्यूल 1 are all those, okay, in which, तो देखो समझ से क्या सीन है. अगर यहां से एक हो सकता है SRK, that is an Indian, he wants to buy, an Indian wants to buy assets or immovable property abroad. Indian wants to buy immovable property abroad. तो ये एक क्लास के ट्रांजैक्शन में हुआ जिधर पैसा बाहर जा रहा है और हम लोग एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. So classes of capital account transactions for person resident in India. So he's a person resident in India. और एक दूसरा हो सकता है वो लोग भी तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं. तो लेट्स से देयर आर सो मेनी फॉरेनर्स, फॉरेनर्स भी इंडिया में एसेट्स बाय कर सकते हैं. सो सेकेंड क्लास ऑफ कैपिटल transactions is for person resident outside India. So even foreigners can do capital account transactions in India. तो पहला वाला क्लास देखते हैं. अब क्या क्या assets हो सकते हैं? Can you tell me assets and liabilities को कौन से transactions alter कर सकते हैं? Example. So let's say मैं immovable property खरीद रहा हूँ, या मैं movable property खरीद सकता हूँ, shares खरीद रहा हूँ, मैं कोई insurance खरीद रहा हूँ. तो ये सब क्या होता है? Assets. Liabilities में क्या हो सकता है? मैंने कोई लोन लिया, मैंने कोई गारंटी दी, या तो ये सब तुम्हारे लाइबिलिटीज में आएंगे. सो इफ आई बॉट एनी शेयर्स, लोन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गारंटीज, लोन्स, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अब्रॉड, okay, these are all transactions that SRK is doing abroad. These are all your capital account transactions. Taking insurance policy, ये भी एक asset हो गया तुम्हारा. Remittance of payment outside India. तो ये सब SRK buys house in Dubai. Now let's see the other way around. Classes of capital account transactions where a person resident outside India is doing a transaction in India. जैसे हम लोग बाय कर सकते हैं, वो लोग भी बाय कर सकते हैं. सोचो ये एक बंदा है या कोई कंपनी है, वो लोग फॉरेन कंपनी है और वो लोग ट्रांजैक्शन इंडिया में कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. सो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट, तो स्टॉक एक्सचेंज में डाल रहे हैं या जेवी कर रहे हैं वो लोग. एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे तो ये इट्स एग्जैक्ट रिवर्स. गारंटी, लोन्स, फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया इज बीइंग मेंटेन्ड, और रेमिटेंस ऑफ द मनी, ये सब तुम्हारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बाय person of non-person resident outside India. Let's say for example, you can say Shane Warne. Shane Warne ये सारे जब transactions करेगा तो वो क्लास 2 में आएंगे, ऊपर वाले क्लास 1 में. अब आते हैं acquisition and transfer of immovable property in India. Now we are talking of someone from abroad wants to buy property in India. उसको घर खरीदना है. तुमको लग रहा है फॉरेनर्स इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? यस और नो?
आंसर इज नो. ओनली 2 people आर अलाउड जो फॉरेनर्स और इंडिया में बाय करना चाहते हैं. एक है एनआरआई और दूसरा है पीआईओ. ओके, और वो भी कौन से ले सकते हैं प्रॉपर्टी. लेट्स सी. दिस इज एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया. ये सब इंडिया में बाय कर रहे हैं. हु कैन परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया. सो मे बी एनआरआई और पीआईओ. ये एनआरआई क्या खरीद सकते हैं और पीआईओ. दे ऑल कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इंडिया बट नॉट एग्रीकल्चरल लैंड, फार्म हाउस, प्लांटेशन, ये सब नहीं ले सकते. एंड दे कैन इवन ट्रांसफर इट टू एनी अदर पर्सन एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई. Acquisition of by PIO, same provision that even he can buy, but he cannot buy agricultural farmhouse or plantation land. He may also gift it to someone by way of gift to any other person. Acquisition of immovable property for carrying on permitted activity. तो जनरली ब्रांच ऑफिस बाय कर रहे तो वो लोग कर सकते हैं. पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया दे कैन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, purchase or sale of immovable property by foreign embassies, diplomats, consulates, etc. तो even foreign embassies भी जगह खरीद सकते हैं, purchase कर सकते हैं, बेच सकते हैं. After they get a clearance from the government and the consideration is entirely paid through a authorized banking channel. Cash वैश नहीं pay कर सकते. It has to be paid through a authorized banking channel. Next, prohibition on acquisition of or transfer by certain countries. No person being a citizen of Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, China, Iran, without permission of RBI shall acquire or transfer any immovable property in India. तो ये सब अप्रूवल में है. रिपैट्रिएशन, सोचो अगर वो लोग ने घर खरीदा था फॉरेनर ने, फिर बेच दिया, तो वो लोग रिपैट्रिएट कर देंगे. दैट इज गिव बैक. रिपैट्रिएट मीन्स व्हाट? टू सेंड बैक. गिव और send back the sale proceeds. No person shall repatriate or send outside India the sale proceeds of any movable property except with the prior permission of RBI. Now let's see. ये अभी इसका ऑपोजिट होगा. जैसे वो लोग यहाँ पे बाय कर सकते थे पीआईओ और ये, अभी हम बाय कर रहे हैं अब्रॉड. सो वी आर टॉकिंग ऑफ एसआरके बाइंग प्रॉपर्टी इन दुबई. Acquisition and transfer of immovable property outside India. So the provisions of अब ये भी important है. Provisions of acquisition and transfer of immovable property shall be contained in the FEM Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India Regulations 2000. So RBI will prescribe the rules. A person resident in India is prohibited from acquiring without RBI permission. Okay. A person resident in India may acquire immovable property outside India by way of purchase of foreign exchange held in resident foreign currency account. तो एक रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, उससे तुम अब्रॉड बाय कर सकते हो. ओके. अब रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है? एक रेसिडेंट है जो मे बी अब्रॉड से छोड़ के रिटर्न इंडिया में आ रहा है परमानेंटली. तो कितनी बार होता है यू गो टू अनदर कंट्री लाइक कनाडा, फिर अच्छा नहीं लगा तो यू प्लान टू कम बैक, बट थोड़ा सब तुमने कमाया होगा अब्रॉड फॉरेन करेंसी में, तो वो रेसिडेंट के फॉरेन करेंसी अकाउंट में हो सकता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया for the acquisition of this immovable property outside India, you can use your liberalized remittance scheme, the limit specified. So a resident individual can send remittance under the LRS scheme for purchasing property outside India. Now coming to possession and retention of foreign currency or foreign coins. So there is a special act called as a FEM, Possession and Retention of Foreign Currency Regulations 2015. It deals with the limits of possession and retention of foreign currency and foreign coins. So how much foreign currency or foreign coins can a person hold? So under regulation 3 of RBI, of the regulations, it prescribes the following limits for possession or retention of foreign currency or foreign coins. Namely, possession without limit of foreign currency or this by authorized persons.
within the scope of his authority. So obviously authorized dealers can hold foreign currency or foreign coin without any limit. Possession without any limit of foreign coins by any person. So foreign coins अपने कितना भी रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उस पर. Retention by a person resident in India of foreign currency, banknotes, and foreign currencies traveler's check not exceeding $2,000 or its equivalent in aggregate. मतलब ये सब मिला के अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोई ट्रैवलर्स चेक कहीं जा रहे हो तुम तो कितने का लेके जा सकते हो, $2,000 can be taken for travel purpose, etc. The rest all you can have an international debit or credit card which you can swipe whenever you need it. Now, Regulation 4 deals with possession of foreign exchange by a person resident in India but not permanently resident. So it could be someone who has gone abroad temporarily, and provides that a person resident in India but not permanently resident may possess without any foreign currency in the form of all of this that he has acquired outside India and has brought it into India in accordance with all the provisions of FEMA. तो बंदा बाहर गया है कमा के फॉरेन करेंसी इंडिया में ला रहा है तो विदाउट एनी लिमिट चलेगा. Now coming to compounding of offenses. Compounding of offenses simply means settlement. तो settlement कैसे होता है? So whenever a person has contravened the FEMA law, so there is a contravention of FEMA law. Compounding refers to a process of voluntary admitting the contravention. So you admit that you have made the contravention and plead guilty and seek redressal. उनको बोलते हो गलती हो गई, प्लीज आप मेरे ऊपर केस मत करना, पेनल्टी लेके बात खत्म कर दो. So एक small amount of penalty ले लो. So the Reserve Bank of India is empowered to compound any contravention and after giving an opportunity of being heard. It is a voluntary process in which the individual or any company seeks settlement of the admitted contravention. So let's say Tata's might have not followed some law, so they will admit it and settle it. Willful, malified, fraudulent transactions will not be allowed to be compounded. Under section 15, it says that when it comes to Hawala transactions, it is only enforcement directorate that can deal with it, ED. For compounding of Hawala transactions, enforcement directorate is there. Hawala transaction is movement of black money from one place to another. Contravention may be compounded within 180 days from the date of receipt of the application. तो जैसे अप्लाई किया कि आप कंपाउंड कर लो 180 डेज 6 महीने के अंदर वो कंपाउंड हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा. तो उसका जो भी डिटेल्स है वो 180 डेज में पता चल जाएगा. Where the contravention has been compounded, settlement accept हो चुका है, then the accused will be relieved from further prosecution or further proceeding. So he'll be really happy. Next is payment of compounded amount. The entire amount जो भी compounding charges decide हुआ, he shall deposit it within 15 days. So within a span of 15 days, you have to pay the compounding charges and end the matter. If a person fails to pay, he shall be deemed to have never made an application for compounding and the provisions of contravention which shall apply to him. तो बेसिकली जैसे अग्री कर लिया कि इतना सेटलमेंट चार्जेस है, आपको उसको एंड कर देना चाहिए. अगर एंड नहीं किया तो अगर तुमने पेमेंट नहीं किया विद इन 15 डेज ऑफ फ्रॉम विच इट हैज बीन डिसाइडेड कि कंपाउंडिंग कर दिया, तो देन वो वापस फ्रेश ऑफेंस का काउंट होके वापस केस चालू हो जाएगा. नेक्स्ट इज एडजुडिकेशन एंड अपील. तो सबसे पहले ये हायरार्की ऑलरेडी दी हुई है. पहले तुमने फेमा लॉ वायलेट कर दिया होगा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी जो तुम्हारे ऊपर केस कर देगी और वो लोग एक जजमेंट पास कर देंगे कि आप गलत हो. फिर आपको अपील में जाना पड़ेगा. अपील कैन गो टू स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स
अगर वहां से भी कुछ नहीं हो तो you can go before the appellate authority. You can see the days within how much time you will go. फिर appellate authority से you can go to the high court. Okay. Then enforcement directorate भी है for implementation of the act. ED investigations भी कर सकते हैं, तो enforcement directorate may take up investigation of any company to check. Now coming to authorized person, again you can mark it as important. Authorized person are those who are authorized to deal in foreign exchange by RBI. Under section 10, any person who has made an application to RBI may be authorized to act as an authorized dealer called as money exchanger, etc. The authorization is required in writing. Authorized persons are required to comply with the directions of RBI. Common sense, and because RBI is a regulator, if you don't listen, then they can even revoke your license. Power of RBI to issue directions to the authorized person. तो RBI can even issue directions कि आप ये करिए, ऐसा करिए, सब direction, and they will have to bound to follow. If they don't follow, then there will be a fine. That is it. We are done with the chapter. The most important part from the chapter, important questions from exam point of view. First is your current account transactions and your capital account transactions. Second most important is immovable property. If you want to buy, if you want to purchase immovable property inside or outside India, तो क्या provisions है? The next important question is authorized dealers कौन है? Write a short note on authorized dealers. Then the next important, you could say, what is compounding of offences under FEMA? Compounding of offences. So section 15 में compound कर सकते हो तुम offences जो भी किए गए हैं, तो तुम्हें admit करना पड़ेगा और 180 days के अंदर compound हो जाएगा. एक बार compound हो गया और कंपाउंडिंग अमाउंट बता दिया तो 15 दिन के अंदर तुमको वो पेमेंट कर देना है. नहीं करोगे तो फिर बाद में केस वापस रिकंटिन्यू हो जाएगा. फिर वो लोग ने ये भी बताया कि आप फॉरेन करेंसी कितना आपके पोजेशन में रख सकते हो. तो ऑथराइज डीलर्स अनलिमिटेड रख सकते हैं. अगर तुम अब्रॉड जाके कमा के आए हो तो भी अनलिमिटेड का रख सकते हो. ओके, ऑल ऑफ दिस. एंड देन द सिक्स्थ पार्ट, द अपीलेट अथॉरिटीज कौन कौन सी है. पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रहेगा, फिर डायरेक्टर ऑफ अपील्स रहेगा. ओके, देन यू हैव द अपीलेट ट्राइब्यूनल, देन हाई कोर्ट. And that is it. We are done with the chapter. And these are the questions that come in your exam.